Bismillahirrahmanirrahim. Short questions. Chapter number 8 Aliphatic hydrocarbons. 8.3 Alkanes और paraffins के टॉपिक से जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन 8.31 से. क्वेश्चन नंबर 13 टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में से ही सारे. आउटलाइन द मेथड्स अवेलेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स. Outline the methods available for the preparations of alkane. For the preparation of alkane. Alkane की preparation के लिए कौन कौन से methods हैं alkane को बनाने के लिए. There are following method to prepare alkanes. Methods to prepare alkanes. Number 1. Hydrogenation of unsaturated hydrocarbons from alkyl halide. Decarboxylation of monocarboxylic acid by using soda lime Kolbe's electrolytic method. Kolbe's electrolytic method from carbonyl compounds, Clemmensen or Wolff-Kishner's reduction from Grignard reagents. Outline the methods available for the preparation of alkanes. There are following method to prepare alkanes: hydrogenation of unsaturated hydrocarbons from alkyl halide, decarboxylation of monocarboxylic acid by using soda lime Kolbe's electrolytic method, from carbonyl compounds, Clemmensen's or Wolff-Kishner's reduction from Grignard reagents. There are following methods to prepare alkanes: hydrogenation of unsaturated hydrocarbons from alkyl halide, decarboxylation of monocarboxylic acid by using soda lime Kolbe's electrolytic method, from carbonyl compound, Clemmensen or Wolff reduction from Grignard reagents. There are following methods to prepare alkanes: hydrogenation of unsaturated hydrocarbons from alkyl halide, decarboxylation of monocarboxylic acid by using soda lime Kolbe's electrolytic method, from carbonyl compound, Clemmensen or Wolff-Kishner's reduction from Grignard reagent. There are following method to prepare alkanes: hydrogenation of unsaturated hydrocarbons from alkyl halide, decarboxylation of monocarboxylic acid by using soda lime Kolbe's electrolytic method, from carbonyl compounds, Clemmensen or Wolff-Kishner's reduction from Grignard reagent. There are following method to prepare alkanes: hydrogenation of unsaturated hydrocarbons from alkyl halide, decarboxylation of monocarboxylic acid by using soda lime Kolbe's electrolytic method, from carbonyl compounds, Clemmensen or Wolff-Kishner's reduction from Grignard reagents. Hydrogenation of unsaturated hydrocarbon from alkyl halide, decarboxylation of monocarboxylic acid by using soda lime Kolbe's electrolytic method, from carbonyl compounds, from Grignard reagents. Hydrogenation of unsaturated hydrocarbons from alkyl halide, decarboxylation of monocarboxylic acid by using soda lime Kolbe's electrolytic method, from carbonyl compound, Clemmensen or Wolff-Kishner's reduction from Grignard reagent. Hydrogenation of unsaturated hydrocarbons from alkyl halide, decarboxylation of monocarboxylic acid by using soda lime Kolbe's electrolytic method, from carbonyl compound, Clemmensen or Wolff-Kishner's reduction from Grignard reagent. There are following methods to prepare alkanes: hydrogenation of unsaturated hydrocarbons from alkyl halide, decarboxylation of monocarboxylic acid by using soda lime Kolbe's electrolytic method, from carbonyl compound, Clemmensen or Wolff-Kishner's reduction from Grignard reagents. There are following method to prepare alkanes: hydrogenation of unsaturated hydrocarbons, alkyl halides, decarboxylation of monocarboxylic acid, soda lime by using soda lime Kolbe's electrolytic method, from carbonyl compound, Clemmensen or Wolff-Kishner's reduction from Grignard reagent. Hydrogenation of unsaturated hydrocarbons from alkyl halide, decarboxylation of monocarboxylic acid by using soda lime Kolbe's electrolytic method, from carbonyl compound, Clemmensen or Wolff-Kishner's reduction from Grignard reagent. There are the following method to prepare alkanes: hydrogenation of unsaturated hydrocarbons from alkyl halide, decarboxylation of monocarboxylic acid by using soda lime Kolbe's electrolytic method, from carbonyl compounds, Clemmensen or Wolff-Kishner's reduction from carbonyl compounds, and from Grignard reagent. The following methods are the following methods to prepare. These are the following methods to prepare alkanes: hydrogenation of unsaturated hydrocarbons from alkyl halide, decarboxylation of monocarboxylic acid by using soda lime Kolbe's electrolytic method, from carbonyl compounds, Clemmensen or Wolff-Kishner's reduction from Grignard reagents. Hydrogenation of unsaturated hydrocarbons from alkyl halide, decarboxylation of monocarboxylic acid by using soda lime Kolbe's electrolytic method, from carbonyl compound, Clemmensen or Wolff-Kishner's reduction from Grignard reagents. There are following methods to prepare alkanes: hydrogenation of unsaturated hydrocarbons from alkyl halide, Clemmensen's reduction and Wolff-Kishner's reduction from carbonyl compound and Grignard reagents, and decarboxylation of monocarboxylic acid by using soda lime and Kolbe's electrolytic method from alkyl halides. So there are
the following methods to prepare alkane. There are many methods to prepare alkane, such are decarboxylation of monocarboxylic acid using Kolb's electrolytic method, and by soda lime, carbonyl compounds, Clemmensen or Wolff-Kishner's reduction, and hydrogenation of unsaturated hydrocarbons, and hydrogenation of unsaturated hydrocarbons, and then alkyl halides. Next question. Three different alkanes yield 2-methyl-butane when they are hydrogenated in the presence of a metal catalyst. When they are hydrogenated in the presence of a metal catalyst, give the structures and write the equations for the reactions involved. तीन different alkanes हैं जो yield करते हैं 2-methyl-butane when they are hydrogenated in the presence of a metal catalyst. Give their structures and write equations for the reactions involved. वो कह रहा है कि 3 डिफरेंट अल्केन्स हैं, वो यील्ड करते हैं, बनाते हैं 2-methyl-butane व्हेन दे आर हाइड्रोजनेटेड, जब इनमें हाइड्रोजन ऐड किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ मेटल कैटलिस्ट, और मेटल कैटलिस्ट भी रखा जाता है. गिव देयर स्ट्रक्चर्स, इनके स्ट्रक्चर्स दीजिए, एंड राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस इन्वॉल्व, और इक्वेशन भी रखिए दीजिए जो रिएक्शंस में इन्वॉल्व हों. आंसर: व्हेन एल्केन्स आर हाइड्रोजनेटेड दे गिव एल्केन्स. 2-methyl-butane is an alkane having the following structures. 1, 2, 3, 4 and then 2 pair है methyl, यानी 2-methyl-butane. 2-methyl-butane is an alkane having the following structures. The reactions of these alkanes are as follows: 2-methyl-1-butene plus hydrogen. In the presence of nickel, we give it heat, and that gives us 2-methyl-butane. Then again 2-methyl-2-butene. 2-methyl-2-butene is hydrogenated in the presence of a nickel, and when it's heated it gives us 2-methyl-butane. Then 3-methyl-1-butene. 3-methyl-1-butene, when it's heated in the presence of a nickel it gives us 2-methyl-butane. So 3 different alkanes yield 2-methyl-butane when they are hydrogenated in the presence of a metal catalyst. Give their structures and write their equations for the reactions involved. So 2-methyl-butane का structure given है, दे दिया है हमने. When alkenes are hydrogenated they give alkanes. 2-methyl-butane is an alkane having the following structure. 2-methyl-butane का structure ये है, butane और 2 पे लगा है methyl. The reactions of these alkenes are as follows. alkenes हैं सारे. 2-methyl पे लगा है 2-methyl-1-butene, 2-methyl-2-butene, 3-methyl-1-butene. 3-methyl-1-butene, 2-methyl, फिर 2 पे मिथाइल, फिर 1 पे, फिर 3 पे मिथाइल, 2 2 3, 2-methyl, 2-methyl, फिर 3-methyl, 1-butene, 2-butene, फिर 1-butene, 1 2 1 और 2 2 3, 2 2 3, 2 2 3, 2-methyl, फिर 2-methyl, फिर 3-methyl, फिर पहले 1, फिर 2, फिर 1. 2-methyl-1-butene, 2-methyl और फिर 1 पे ब्यूटेन, फिर 3 पे मिथाइल और 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल पहले भी था और बाद में भी 2-methyl, और फिर रख दिया 2 पे ब्यूटेन. तो इसके ऊपर भी वही आंसर मिला, 2-methyl-butane का ब्यूटेन मिला. लेकिन जब हमने 3-methyl किया, 1 2 3 4, 3 पे रखा मिथाइल, तो फिर हमने कर दिया 1 पे ब्यूटेन, 1 पे रख दिया. ठीक है. डबल बॉन्ड पहले वहाँ पर था, फिर उससे अगली जगह पे ले आए, फिर उससे अगली जगह पे ले आए, वैसे स्ट्रक्चर सेम ही था, सिर्फ डबल बॉन्ड लगाया. 2-methyl-butane के अंदर एक डबल बॉन्ड ऐड कर देंगे. वो पहले 1 पोजीशन से 2 के दरमियान होगा, फिर 2 से 3 के, फिर 3 से 4 के. नंबरिंग इस तरह चेंज हो जाएगी. तो सेम वही निकल कैटलिस्ट रखा जाएगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ हीट लगाई जाएगी, इसको हीट किया जाएगा और 2-methyl-butane मिल जाएगा. फिजिकल प्रॉपर्टीज 8.3.2 क्वेश्चन नंबर 15 है. व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स. ब्रांचिंग पे क्या इफेक्ट होता है
On the melting, what is the effect of branching? Branching का इफेक्ट क्या होता है on the melting points of alkanes? अल्केन्स के की ब्रांचिंग पर अल्केन्स के मेल्टिंग पॉइंट पर उसकी ब्रांचिंग का क्या असर होता है? द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ अल्केन्स इंक्रीज with the increase in molecular mass, but this increase is not so regular. G. The melting points of alkanes increase with the increase in molecular mass, but this increase is not so regular. The melting points of alkanes increase with the increase in molecular mass, but this increase is not so regular. The melting points of alkanes increase with the increase in molecular mass, but this increase is not so regular. The melting points of alkanes increase with increase in molecular mass. जैसे मॉलिक्यूल का मास बढ़ेगा, दिस विल मेल्टिंग पॉइंट विल इंक्रीज, ठीक है, बट दिस इंक्रीज इज नॉट सो रेगुलर, इट्स नॉट सो रेगुलर. ओके, reactivity of alkanes. 8.3.3 question 16, explain why alkanes are less reactive than alkenes. The least reactivity of alkanes may be explained on the basis of the non-polarity of bonds. The electronegativity difference between carbon and hydrogen is 0.5 or 0.4, which is not appreciable, and the bonding electrons between carbon and hydrogen and carbon are equally shared, making them almost non-polar. Almost non-polar. Furthermore, in alkanes there are only sigma bonds. In sigma bond, the electrons are very tightly held between the nuclei that make the sigma bond very stable and inert. तो ये है जी reactivity of alkanes, inertness of sigma bond. The unreactivity of alkanes can also be explained on the basis of inertness of a sigma bond. In a sigma bond, the electrons are very tightly held between the nuclei, which makes it a very stable bond. A lot of energy is required to break it. Moreover, the electrons present in a sigma bond can neither attack on any electrophile nor a nucleophile can attack on them. Both these facts make alkanes less reactive. The alkanes, paraffins, little affinity. Under ordinary conditions are inert towards acid, alkalis, oxidizing and reducing agents. However, under suitable conditions, the alkanes do not undergo two types of reactions. Substitution reaction. Alkanes do undergo two types of reactions. Substitution and thermal catalytic reactions take place at high temperature on absorption of light through the formation of highly reactive free radicals. The unreactivity of alkanes under normal conditions may be explained on the basis of non-polarity of the bonds forming them. The electronegativity values of carbon and hydrogen do not differ appreciably, and the bonding electrons between carbon and hydrogen and carbon are equally shared, making them almost non-polar. In view of this, the ionic reagents such as acids, alkalis, oxidizing agents, etc. find no reaction site in the alkane molecules to which they could be attached. Explain why alkanes are less reactive than alkenes. The least reactivity of alkanes may be explained on the basis of the non-polarity of the bonds. The electronegativity difference between carbon and hydrogen is 0.4, which is not appreciable, and the bonding electrons between carbon, hydrogen, and carbon are equally shared, making them almost non-polar. Furthermore, in alkanes there are only sigma bonds. In sigma bond, the electrons are very tightly held between the nuclei, and this makes the sigma bond very stable and inert. This makes the sigma bond very stable and inert. Explain why alkanes are less reactive than alkenes. The least reactivity of alkanes may be explained on the basis of non-polarity of bonds. The electronegativity difference between carbon and hydrogen is 0.4, which is not appreciable, and the binding electrons between carbon, hydrogen and carbon are equally shared, making them almost non-polar. Furthermore, in alkanes there are only sigma bonds. In sigma bond, the electrons are very tightly held between the nuclei that makes the sigma bond very stable and inert. The least reactivity of alkanes may be explained on the basis of non-polarity of bonds. The electronegativity difference between carbon and hydrogen is 0.4, which is not appreciable, and the bonding electrons between carbon, hydrogen and carbon are equally shared, making them almost non-polar. Furthermore, in alkanes there are only sigma bonds. In sigma bonds, the electrons are very tightly held between the nuclei. That makes the sigma bond very stable and inert. The least reactivity of alkanes may be explained on the basis of the non-polarity of bonds.
The least reactivity of alkanes may be explained on the basis of the non-polarity of bonds. The electronegativity difference between carbon and hydrogen is 0.4, which is not appreciable, and the bonding electrons between carbon, hydrogen, and carbon are equally shared, making them almost non-polar. Furthermore, in alkanes, there are only sigma bonds. In sigma bonds, the electrons are very tightly held between the nuclei that make the sigma bond very stable and inert. The least reactivity of alkanes may be explained on the basis of non-polarity of bonds. The electronegativity difference between carbon and hydrogen is 0.4, which is not appreciable, and the bonding electrons between carbon, hydrogen, and carbon are equally shared, making them almost non-polar. Furthermore, in alkanes there are only sigma bonds. In sigma bonds, the electrons are very tightly held between the nuclei that makes the sigma bond very stable and inert. The least reactivity of alkanes may be explained on the basis of non-polarity of bonds. The electronegativity difference between carbon and hydrogen is 0.4, which is not appreciable, and the bonding electrons between carbon, hydrogen, and carbon are equally shared, making them almost non-polar. Furthermore, in alkanes, there are only sigma bonds. In sigma bonds, the electrons are very tightly held between the nuclei that makes the sigma bond very stable and inert. The least reactivity of alkanes may be explained on the basis of non-polarity of bonds. The electronegativity difference between carbon and hydrogen is 0.4, which is not appreciable, and the bonding electrons between carbon and almost non-polar, making them almost non-polar. Carbon and hydrogen is 0.4, which is not appreciable, and the bonding electrons between carbon, hydrogen, and carbon are equally shared, making them almost nonpolar. Furthermore, in alkanes, there are only sigma bonds. In sigma bonds, the electrons are very tightly held between the nuclei that make the sigma bond very stable and inert. Inert. The least reactivity of alkanes may be explained on the basis of non-polarity of bonds. The electronegativity difference between carbon and hydrogen is 0.4, which is not appreciable, and the bonding electrons between carbon, hydrogen, and carbon are equally shared, making them almost non-polar. Furthermore, in alkanes, there are only sigma bonds. In sigma bonds, the electrons are very tightly held between the nuclei and makes the sigma bond very stable and inert. The least reactivity of alkanes may be explained on the basis of non-polarity of bonds. The electronegativity difference between carbon and hydrogen is 0.4, which is not appreciable, and the bonding electrons are between carbon, hydrogen, and carbon are equally shared, making them almost non-polar. Furthermore, in alkanes, there are only sigma bonds. In sigma bond, the electrons are very tightly held between the nuclei that makes the sigma bond very stable and inert. The least reactivity of alkanes may be explained on the basis of non-polarity of bonds. The electronegativity difference between carbon and hydrogen is 0.4, which is not appreciable, and the bonding electrons between carbon, hydrogen, and carbon are equally shared, making them almost non-polar. Furthermore, in alkanes, there are only sigma bonds. In sigma bond, the electrons are very tightly held between the nuclei that makes the sigma bond very stable and inert. The least electronegativity of alkanes may be explained on the basis of non-polarity of bonds. The electronegativity difference between carbon and hydrogen is 0.4, which is not appreciable, and the bonding electrons between carbon and carbon hydrogen are equally shared, making them almost non-polar. Furthermore, in alkanes, there are only sigma bonds. In sigma bond, the electrons are polar. In sigma bond, the electrons are very tightly held between the nuclei that makes the sigma bond very stable and inert. The least reactivity of alkanes may be explained on the basis of non-polarity of bonds. The electronegativity difference between carbon and hydrogen is 0.4, which is not appreciable, and the bonding electrons between carbon, hydrogen, and carbon are equally shared, making them almost non-polar. Furthermore, in alkanes, there are only sigma bonds. In sigma bond, the electrons are polar. Further, in sigma bonds, the electrons are very tightly held between nuclei and makes the sigma bond very stable and inert. In sigma bond, the electrons are very tightly held between the nuclei, and that makes the sigma bond very stable and inert. Alkanes are less reactive than alkanes. It can be explained on the basis of the reactivity of alkanes can be explained on the basis of non-polar behavior, non-polarity of bonds. The electronegativity difference between carbon and hydrogen
is 0.4, which is not appreciable, and the bonding electrons between carbon and hydrogen and carbon are almost equally shared, making them almost non-polar. Furthermore, in alkanes there are only sigma bonds. In sigma bond, the electrons are tightly held between the nuclei. The electrons are tightly held between the nuclei. That makes the sigma bond very stable and inert. The least reactivity of alkanes may be explained on the basis of non-polarity of bonds. The electronegativity difference between carbon and hydrogen is 0.4, which is not appreciable, and the bonding electrons between carbon, hydrogen, and carbon are equally shared, making them almost non-polar. Furthermore, in alkanes, there are only sigma bonds. In sigma bonds, the electrons are very tightly held between the nuclei that make the sigma bond very stable and inert. The least reactivity of alkanes may be explained on the basis of non-polarity of bonds. The electronegativity difference between carbon and hydrogen is 0.4, which is not appreciable, and the bonding electrons between carbon, hydrogen, and carbon are equally shared, making them almost non-polar. Furthermore, in alkanes there are only pi bonds. There are only sigma bonds. In sigma bond, the electrons are very tightly held between the nuclei and make the sigma bond very stable and inert. In sigma bond, the electrons are very tightly held between the nuclei that makes the sigma bond very stable and inert. In sigma bond, the electrons are very tightly held between the nuclei that makes the sigma bond very stable and inert. In sigma bond, the electrons are very tightly held between the nuclei that makes the sigma bond very stable and inert. In sigma bond, the electrons are very tightly held between the nuclei that makes the sigma bond very stable and inert. In sigma bond, the electrons are very tightly held between the nuclei that make the sigma bond very stable and inert. In sigma bond, the electrons are very tightly held between the nuclei that makes the sigma bond very stable and inert. In sigma bond, the electrons are very tightly held between the nuclei that makes the sigma bond very stable and inert. Explain why alkanes are less reactive than alkanes. This can be explained on the basis of non-polarity. Carbon and hydrogen have the electronegativity difference between carbon and hydrogen is 0.4, which is not appreciable, and the electronegativity difference is 0.4, which is not appreciable, and the bonding electrons between carbon and hydrogen and carbon are equally shared and almost non-polar. Furthermore, in alkanes only sigma bonds are present. The sigma bonds are in sigma bonds, the electrons are very tightly held between the nuclei that makes the sigma bond very stable and inert. In sigma bonds, the electrons are very tightly held between the nuclei that makes the sigma bond very stable and inert. In sigma bond, the electrons are very tightly held between the nuclei that makes the sigma bond very stable and inert. In sigma bond, the electrons are very tightly held between the nuclei that makes the sigma bond very stable and inert. In sigma bonds, the electrons are held very tightly. The electrons are tightly held between the nuclei that makes the sigma bond very stable and inert. In sigma bond, the electrons are held tightly. In sigma bond, the electrons are very tightly held between the nuclei that makes the sigma bond very stable and inert. In sigma bond, the electrons are very tightly held between the nuclei that makes the sigma bond very stable and inert. In sigma bond, the electrons are very tightly held between the nuclei that makes the sigma bond very stable and inert. In sigma bond, the electrons are very tightly held between the nuclei that makes the sigma bond very stable and inert. In sigma bond, the electrons are very tightly held between the nuclei that makes the sigma bond very stable and inert. In sigma bond, the electrons are held very tightly between the nuclei that makes the sigma bond very stable and inert. In sigma bond, the electrons are very tightly held between the nuclei, hence making it very stable and inert. So the least reactivity of alkanes may be explained on the basis of non-polarity of bonds. The electronegativity difference between carbon and hydrogen is 0.4, which is not appreciable, and the bonding electrons between carbon, hydrogen, and carbon are equally shared, making them almost non-polar. Furthermore, in alkanes there are only sigma bonds. In sigma bond, the electrons are very tightly held between the nuclei that makes the sigma bond very stable and inert. The least reactivity of alkanes may be explained on the basis of non-polarity of bonds. The electronegativity difference between carbon and hydrogen is 0.4, which is not appreciable, and the bonding electrons
and the bonding electrons between carbon and hydrogen and carbon-carbon are equally shared, making them almost nonpolar. Furthermore, in alkanes, there are only sigma bonds. In sigma bond, the electrons are very tightly held between the nuclei, making the sigma bonds very stable and inert. The least reactivity of alkanes may be explained on the basis of nonpolarity of bond. The electronegativity difference between carbon and hydrogen is 0.4, which is not appreciable, and the bonding electrons between carbon, hydrogen, and carbon-carbon are equally shared, making them almost nonpolar. Furthermore, in alkanes, there are only sigma bonds. In sigma bond, the electrons are very tightly held between the nuclei, that makes the sigma bond very stable and inert. The least reactivity of alkanes may be explained on the basis of nonpolarity of bond. The electronegativity difference between carbon and hydrogen is 0.4, which is not appreciable, and the bonding electrons between carbon, hydrogen, and carbon-carbon are equally shared, making them almost nonpolar. Furthermore, in alkanes, there are only sigma bonds. In sigma bond, the electrons are very tightly held between the nuclei, that makes the sigma bond very stable and inert. Why alkanes are less reactive than alkenes? The least reactivity of alkanes may be explained on the basis of nonpolarity of bonds. The electronegativity difference between carbon and hydrogen is 0.4, which is not appreciable, and the bonding electrons between carbon, hydrogen, and carbon-carbon are equally shared, making them almost nonpolar. Furthermore, in alkanes, there are only sigma bonds. In sigma bond, the electrons are very tightly held between the nuclei, that makes the sigma bond very stable and inert. Next question. Uses of methane, say 8.3.5. Question 17. Mention some important uses of methane. Methane ke uses. It is used as a fuel, as illuminating gas. It is used as a fuel and as an illuminating gas. It is used for preparation of carbon black. It is used to manufacture urea fertilizer. It is used for industrial preparation of methyl alcohol, formaldehyde, and hydrogen cyanide. Methane. It is used as a fuel and as an illuminating gas. Illuminating chamakdar gas. It is used for preparation of carbon black. It is used to manufacture urea fertilizer. It is used for industrial preparation of methyl alcohol, formaldehyde, hydrogen cyanide. Illuminating gas. Used as illuminating gas, used as a fuel, and it's used for the preparation of carbon black and to manufacture urea fertilizer. It is used as a fuel and as illuminating gas. It is used for preparation of carbon black. It is used to manufacture urea fertilizer. It is used for industrial preparation of methyl alcohol, formaldehyde, and hydrogen cyanide. It is used as a fuel and as an illuminating gas. It is used for preparation of carbon black. It is used to manufacture urea fertilizer. It is used for industrial preparation of methyl alcohol, formaldehyde, hydrogen cyanide. It is used as fuel and as an illuminating gas. It is used for preparation of carbon black. It is used to manufacture urea fertilizer. It is used for preparation or industrial preparation of methyl alcohol, formaldehyde, and hydrogen cyanide. It is used as a fuel and as illuminating gas. It is used for preparation of carbon black. It is used to manufacture urea fertilizer. It is used for industrial preparation of methyl alcohol, formaldehyde, and hydrogen cyanide. It is used as a fuel and as illuminating gas. It is used for preparation of carbon black. It is used to manufacture urea fertilizer. It is used for industrial preparation of methyl alcohol, formaldehyde, and hydrogen cyanide. It is used as fuel and as illuminating gas. It is used for preparation of carbon black. It is used to manufacture urea fertilizer. It is used for industrial preparation of methyl alcohol, formaldehyde, and hydrogen cyanide. It is used as a fuel and as illuminating gas. It is used for preparation of carbon black. It is used to manufacture urea fertilizer. It is used to manufacture It is used for industrial preparation of methyl alcohol, formaldehyde, and hydrogen cyanide. So, it is used as fuel and as illuminating gas. It is used to prepare urea. It is used to prepare urea fertilizer. Fertilizer, and it is used to prepare methyl alcohol, formaldehyde, and hydrogen cyanide, and it is used for the preparation of carbon black. Urea fertilization, and methyl alcohol, formaldehyde, and HCN, hydrogen cyanide, used as fuel and as illuminating gas. Next question number 18. Write the skeleton showing only the arrangement of carbon atom for all the possible alkenes of the molecular formula C5H10. C5H10 following possible structural formulas are there for this formula. एक तो है 2-pentene,
C5H10 पेंटीन, C5H10 पेंटीन है, तो इसको लिख सकते हैं ठीक 1 2 3 4 2 methyl 1 butene 2 methyl 3 methyl 1 butene और 2 methyl 2 butene. Following possible structural formulas for this molecular formula, यानी 2 पेंटीन का फॉर्मूला के साथ हम क्या लिख सकते हैं, कार्बन को एक को हटाएं तो वो बन सकता है 2 methyl 2 butene, 2 methyl 2 butene. Following possible structural formulas are there for this molecular formula 2 पेंटीन के लिए. तो पहला 2 methyl 2 पे methyl and 1 butene, then 3 methyl और 1 butene, फिर 2 methyl 2 methyl 2 butene, 2 methyl 2 butene, 2 methyl 1 butene, 3 methyl 1 butene, then 2 methyl 2 butene. Following possible general methods of preparation. 8.4.1 Question 19. Describe different methods for the preparation of alkenes. How would you establish that ethylene contains a double bond? Describe different methods for the preparation of alkenes. How would you establish that ethylene contains a double bond? There are following methods to prepare alkenes: dehydrohalogenation of alkyl halides, dehydration of alcohols, dehalogenation of vicinal dihalides, electrolysis of salts of decarboxylic acid, partial hydrogenation of alkynes. Double bond in ethylene can be detected by reaction with bromine in CCl4 and Bayer's reagent. There are following methods to prepare alkenes: dehydrohalogenation of alkyl halides, dehydration of alcohols, dehalogenation of vicinal dihalides, electrolysis of salts of decarboxylic acid, partial hydrogenation of alkynes. Double bond in ethylene can be detected by reaction with bromine in CCl4, Bayer's reagent. There are following method to prepare alkenes: dehydrohalogenation of alkyl halides, dehydration of alcohols, dehalogenation of vicinal dihalides, electrolysis of salts of decarboxylic acid, partial hydrogenation of alkynes. Double bond in ethylene can be detected by reaction with bromine in CCl4, Bayer's reagent. There are following method to prepare alkenes: dehydrohalogenation of alkyl halides, dehydration of alcohols, dehalogenation of vicinal dihalides, electrolysis of salts of decarboxylic acid, partial hydrogenation of alkynes. Double bond in ethylene can be detected by reaction with bromine in CCl4 and Bayer's reagent. There are following method to prepare alkenes: dehydrohalogenation of alkyl halides, dehydration of alcohols, dehalogenation of vicinal dihalides, electrolysis of salts of decarboxylic acid, partial hydrogenation of alkynes. Double bond in ethylene can be detected by reaction with bromine and CCl4, Bayer's reagent. There are following method to prepare alkenes. These are the following methods to prepare alkenes: dehydrohalogenation of alkyl halides, dehydration of alcohols, dehalogenation of vicinal dihalides, electrolysis of salts of decarboxylic acid, partial hydrogenation of alkynes. Partial hydrogenation of alkynes से alkenes बन सकते हैं: electrolysis of salts of dicarboxylic acid, electrolysis of salts of dicarboxylic acid, dehalogenation of vicinal dihalides, halogen को रिमूव कर दो vicinal dihalides में से, तब भी alkenes बनते हैं. dehydration of alcohols में से water release कर दें तो तब भी, और dehydrohalogenation of alkenes. alkyl halides से हाइड्रोजन और हैलोजन वो दोनों निकाल दें तो हमारे पास alkene बन सकता है. dehydrohalogenation of alkyl halides, dehydration of alcohols, dehalogenation of vicinal dihalides, electrolysis of salts of dicarboxylic acid, partial hydrogenation of alkynes. Double bond in ethylene can be detected by reaction with bromine in CCl4, Bayer's reagent. There are following methods to prepare alkenes: dehydrohalogenation of alkyl halides, dehydration of alcohols, dehalogenation of vicinal dihalides, electrolysis of salts of dicarboxylic acid, partial hydrogenation of alkynes. Double bond in ethylene can be detected by reaction with bromine in CCl4, Bayer's reagent. There are following methods to prepare alkenes:
dehydrohalogenation of alkyl halides, dehydration of alcohols, dehalogenation of vicinal dihalides, electrolysis of salts of dicarboxylic acid, partial hydrogenation of alkynes. Double bond in ethylene can be detected by reaction with bromine in CCl4, Bayer's reagent. There are following methods to prepare alkenes: dehydrohalogenation of alkyl halides, dehydration of alcohols, dehalogenation of vicinal dihalides, electrolysis of salts of dicarboxylic acid, partial hydrogenation of alkynes. Double bond in ethylene can be detected by reaction with bromine in CCl4 and Bayer's reagent. There are following method to prepare alkenes: dehydrohalogenation of alkyl halides, dehydrohalogenation of alkyl halides and dehydrohalogenation of alkyl halides. अल्काइल हैलाइड्स में से हेलोजन का रिमूवल, डिहाइड्रो और हाइड्रोजन का रिमूवल, हाइड्रोजन और हेलोजनेशन का हेलोजन का रिमूवल gives us ethene. Dehydration of alcohols, अल्कोहल से वाटर का रिलीज करें. Dehalogenation of vicinal dihalides, विसिनल डाइहाइड से हेलोजन को निकाल दें, तब भी इथीन बन सकता है. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट्स का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दिया जाए ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स. पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस, अल्काइंस की पार्शियल हाइड्रोजनेशन कराई जाए. डबल बॉन्ड इन इथाइलिन कैन बी डिटेक्टेड बाय रिएक्शन विद ब्रोमीन इन CCl4, Bayer's reagent. There are following methods to prepare alkenes: dehydrohalogenation of alkyl halides, dehydration of alcohols, dehalogenation of vicinal dihalides, electrolysis of salts of dicarboxylic acid, partial hydrogenation of alkynes. Double bond in ethylene can be detected by reaction with bromine in CCl4, Bayer's reagent. There are following methods to prepare alkenes: dehydrohalogenation of alkyl halides, dehydration of alcohols, dehalogenation of vicinal dihalides, electrolysis of salts of dicarboxylic acid, partial hydrogenation of alkynes. Double bond in ethylene can be detected by reaction with bromine in CCl4, Bayer's reagent. There are following method to prepare alkenes: dehydrohalogenation of alkyl halides, dehydration of alcohols, dehalogenation of vicinal dihalides, electrolysis of salts of dicarboxylic acid, partial hydrogenation of alkynes. Double bond in ethylene can be detected by reaction with bromine in CCl4, Bayer's reagent. There are following methods to prepare alkenes: dehydrohalogenation of alkyl halides, dehydration of alcohols, dehalogenation of vicinal dihalides, and electrolysis of salts of dicarboxylic acid, partial hydrogenation of alkynes. Double bond in ethylene can be detected by reaction with bromine in CCl4, Bayer's reagent. There are the following method to prepare alkenes. So first, partial hydrogenation of alkynes, electrolysis of salts of dicarboxylic acids, and removal of water from alcohols. Dehydration of alcohols, and dehalogenation from vicinal dihalides, and from vicinal dihalides. और एक और है, that is dehydrohalogenation of alkyl halides. Double bond in ethylene can be detected by reaction with bromine in CCl4 and Bayer's reagent. There are following methods to prepare alkenes: dehydrohalogenation of alkyl halides, dehalogenation of vicinal dihalides, dehydration of alcohols, electrolysis of salts of dicarboxylic acid, partial hydrogenation of alkynes. Double bond in ethylene can be detected by reaction with bromine in CCl4 and Bayer's reagent. There are following methods to prepare alkenes: dehydrohalogenation of alkyl halides, dehydration of alcohols, dehalogenation of vicinal dihalides, electrolysis of salts of dicarboxylic acid, partial hydrogenation of alkynes. And double bond in ethylene can be detected by reaction with bromine in CCl4, Bayer's reagent. There are following methods to prepare alkenes: partial hydrogenation of alkynes, electrolysis of salts of dicarboxylic acid, alcohols,
removal of water, dehydration of alcohols, dehalogenation of vicinal dihalides, dehalogenation of vicinal dihalides, dehalogenation of vicinal dihalides, or dehydrohalogenation of alkyl halides. The double bond in ethylene can be detected by reaction with bromine in CCl4 and Bayer's reagent. Give structural formulas of the following of the alkenes expected to form by the dehydrohalogenation of the following compounds with a strong base. Give structural formulas of alkenes expected to form by the dehydrohalogenation of following compounds with a strong base. अच्छा 1-chloropentane 1 chloropentane 1 2 3 1 chloropentane 1 chloropentane 1 2 3 4 1 pentene 1 2 3 4 5 plus KCl plus H2O 2 chloro, ये पेंटेन तो नहीं लिखा, ये 4 है, 1 2 3 4 1 क्लोरो ब्यूटेन लिखा हुआ है। ये है 1 पेंटेन, इनको अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराया तो KCl और OH आ गया, KCl प्लस यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, एक हाइड्रोजन चला गया तो बन गया वाटर। OH रिलीज के अलग, KCl के साथ अलग, OH एक H के साथ अलग, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, 1 पेंटीन बन जाएंगे, 1 पेंटीन विल बी फॉर्म्ड when reacted with the give structural formulas of the alkenes expected to form by the dehydrohalogenation, हाइड्रो और हेलोजिनेशन, हेलोजन को भी निकालना है और हाइड्रोजन भी निकालना है, तो उससे क्या बनेगा एल्कीन्स का when reacted with the strong base। अब सेकेंड के अंदर है 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 पे क्लोरो है, 2 क्लोरो 2 पे क्लोरो 1 2 2 पे क्लोरो 3 पे 1 2 3, ये 3 पे मिथाइल और ये ब्यूटेन 1 2 3 4, और ये 2 गलत है। इसको रिएक्ट कराए KOH के साथ अल्कोहलिक के साथ, तो OH के साथ एक हाइड्रोजन निकल के वाटर, K गया Cl के साथ, बचा गया, जो बचेगा डबल बॉन्ड बन जाएगा इनके दरमियान। यहाँ से निकला एक Cl गया और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लें, तो इन दोनों के दरमियान एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन 1 क्लोरो 2 2 डाईमिथाइल प्रोपेन 1 क्लोरो 2 2 डाईमिथाइल प्रोपेन 3 CH3 C CH3 CH3 CH2 Cl प्लस KOH अल्कोहलिक। सो एक क्लोरीन निकला और एक हाइड्रोजन जाएगा कहीं से, क्लोरीन तो क्या नो रिएक्शन बिकॉज देयर इज़ नो बीटा हाइड्रोजन, ठीक है, बीटा हाइड्रोजन नहीं है कोई, ठीक 2 ठीक, ये है अल्फ़ा कार्बन, ये है बीटा कार्बन, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लगा। Write down chemical equations for the preparation of propene from the following compounds. Write down the chemical equations for the preparation of propene from the following compounds. CH3 CH2 CH2OH alcohol. Alcohol undergo dehydration in the presence of strong dehydrating agent to produce alkenes. H2SO4 concentrated H2SO4, तो ये डिहाइड्रेशन हो जाएगी, वाटर इज रिलीज्ड OH एंड H, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज और यहाँ से OH रिलीज, CH2 और CH का डबल बॉन्ड बन गया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अल्काइन अंडरगो पार्शियल हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलर्स कैटलिस्ट टू प्रोड्यूस अल्कीन। Write down the chemical equations for the preparation of propene from the following compounds. अल्कोहल और ये अल्काइन और पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन प्रोपाइल अल्कोहल, तो इसकी पार्शियल हाइड्रोजनेशन की है लिंडलर्स कैटलिस्ट डालते हुए। अल्काइन्स अंडरगो पार्शियल हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलर्स कैटलिस्ट टू प्रोड्यूस अल्कीन।
हाइड्रोजिनेशन, इसमें अच्छा partial hydrogenation, हाइड्रोजन का addition in the presence of Lindlar's catalyst to produce alkene, palladium barium sulfate और quinoline, palladium barium sulfate quinoline, barium sulfate in the presence of quinoline, Lindlar's catalyst है palladium barium sulfate quinoline, तो ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 isopropyl alcohol, isopropyl chloride. Alkyl halides undergo dehydrohallogenation in the presence of alcoholic KOH to form an alkene. Alkyl halides undergo dehydrohallogenation in the presence of alcoholic KOH to form alkene. ठीक है, यहाँ से एक क्लोरीन रिमूव होगा K के साथ, KCl, OH चला जाएगा, एक हाइड्रोजन चाहिए, वो हाइड्रोजन आएगा यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, हो जाएगा वाटर KCl और ये बन जाएगा अल्कीन, एथीन बन जाएगा, सॉरी अल्कीन बन जाएगा, अल्कीन 1 2 3, ये है प्रोपीन बन गया। रिएक्शन डबल की तो फर्स्ट में है पहला है अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करते हैं स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट को रखते हुए, दैट इज़ H2SO4 कंसनट्रेटेड, तो हो जाएगी इसकी हाइड्रोजनेशन, एक OH यहाँ से और हाइड्रोजन यहाँ से, वाटर रिलीज हो जाएगा। और अल्काइन की पार्शियल हाइड्रोजनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिंटलर्स कैटलिस्ट जो है पैलेडियम बेरियम सल्फेट इन द प्रेजेंस और क्विनोलिन भी। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की को अल्कोहलिक KOH में रखेंगे, तो ये अल्काइल हैलाइड है, एक अल्काइल है, एक तो अल्काइल है और एक हैलाइड है, ये हैलाइड है और ये एक अल्काइल है। Alkyl halides undergo dehydrohallogenation in the presence of alcoholic KOH to form an alkene. Alkyl halides undergo dehydrohallogenation in the presence of alcoholic KOH to form an alkene. Isopropyl chloride. Alkyl halide, ठीक है। क्लोरीन एक क्लोराइड है और प्रोपाइल एक अल्काइल है। Isopropyl chloride is an alkyl halide. Alkyl halides undergo dehydrohallogenation in the presence of alcoholic KOH to form an alkene. Alcoholic KOH to form an alkene. H के साथ चला गया हाइड्रोजन और यहाँ से Cl चला गया तो डबल बॉन्ड बन जाएगा दरम्यान, इन दोनों के दरम्यान। तो रिएक्शन ऑफ alkenes. Question number 22. Give the general mechanism of electrophilic addition reactions of alkenes. Give the general mechanism of electrophilic addition reactions of alkenes. Electrophilic addition reactions of alkenes. It involves the following steps. The reagent E and Nu ionizes to give and ionizes to GIE ionizes to give and electrophile and nucleophile to give electrophile nucleophile. E minus N E to Nu nucleophile. E है और एक Nu के साथ जुड़ा है, E पॉजिटिव अलग Nu नेगेटिव हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल और ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप 1. द इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स द कार्बन डबल बॉन्ड. Electrophile attacks the carbon double bond and forms a covalent bond with one carbon and the other carbon bears positive charge. As a result, a carbocation is formed. तो पहले ये आएगा डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा, एक कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और एक कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एक कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एक कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव और ये नेगेटिव चार्ज के साथ, ठीक। The nucleophile, step 2, the nucleophile now attacks the carbocation to form an addition product. The nucleophile now attacks the carbocation to form an addition product. एक nucleophile आके इधर जुड़ेगा. Since the reaction is initiated by addition of electrophile, so it is called electrophilic addition reaction. Since the reaction is initiated by addition of electrophile, so it is called electrophilic addition reaction. The general mechanism of electrophilic addition reactions of alkenes, it involves the following step. The reagent E and U ionizes to give an electrophile and nucleophile. To give an electrophile to give an electrophile and nucleophile.
The reagent ENu ionizes to give E positive and Nu negative. Electrophile and nucleophile. Step 1. The electrophile attacks the carbon-carbon double bond and forms a covalent bond with one carbon, and the other carbon bears the positive charge. As a result, a carbocation is formed. E positive plus C double bond C यानी alkene. स्लो रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनेगा. E रिएक्ट कर जाता है, attacks the carbon-carbon double bond and forms a covalent bond with one carbon, and the other carbon bears positive charge. As a result, a carbocation is formed. Step 2. The nucleophile now attacks the carbocation to form an addition product. That is a fast reaction. E जुड़ा हुआ है और ये न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा पॉजिटिव वाले के पास, तो ये फास्ट जल्दी से हो जाएगा. एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म. सिंस द रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सो इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. एक रिएजेंट था, आयनाइज होकर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बना. इलेक्ट्रोफाइल ने इनिशिएट किया प्रोसेस को, इसने डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक किया कार्बन कार्बन के दरमियान में, और एक कार्बन के साथ इसने बना लिया कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, तो दूसरे कार्बन के ऊपर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज. तो जब न्यूक्लियोफाइल आएगा इस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करेगा ताकि एडिशन प्रोडक्ट बने. ये रिएक्शन फास्ट होगा और इलेक्ट्रोफिलिक वाला स्लो होगा. सिंस द रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सो इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. It involves the following steps. The reagent ENu ionizes to give an electrophile and nucleophile. Step 1. The electrophile attacks the carbon-carbon double bond and forms a covalent bond with one carbon, and the other carbon bears positive charge. As a result, a carbocation is formed. The nucleophile now attacks the carbocation to form an addition product. Since the reaction is initiated by addition of electrophile, so it is called electrophilic addition reaction. How may ethene be converted into ethyl alcohol? How may ethane be converted into ethyl alcohol? Answer. Ethene can be converted into ethyl alcohol by addition of water molecule. This can be done by using concentrated H2SO4. Water and concentrated H2SO4. तो वाटर OH इसके पास चला गया और यहाँ पे हाइड्रोजन वाटर का आ गया concentrated H2SO4 के ज़रिए से. Ethene can be converted into ethyl alcohol by addition of water molecule. This can be done by using concentrated H2SO4. Ethene to ethyl alcohol by adding water. Ethene to ethyl alcohol by adding H2SO4 by using concentrated H2SO4 and by adding water molecule. This can be done. Starting form ethene outline the reactions for the preparation of following compounds. Starting from ethene, outline the reactions for the preparation of following compounds: 1,2-dibromoethane and ethine. Ethene to 1,2-dibromoethane. 1,2-dibromoethane. So ब्रोमो एथीन है प्लस ब्रोमीन है, CCl4 में रखा, रिएक्शन करा दिया, तो हमें मिलेगा CH2Br और Br, CH2Br. अब ब्रोमीन इधर आ गया और इधर भी आ गया, डबल बॉन्ड ख़त्म, Br. डबल बॉन्ड ख़त्म होगा तो Br और Br दोनों इस तरफ आके जुड़ेंगे. CCl4 डबल बॉन्ड तोड़ेगा, Br इधर आके जुड़ेगा और Br इधर आके वैलेंसी पूरी कार्बन की. 1,2-डाइब्रोमोइथेन. इथीन टू एथाइन कैसे बनेगा? Br2 वही CCl4, तो ये भी 1,2-डाइब्रोमोइथेन, ये तो वही हो गया. ये है एथीन, अच्छा डाइब्रोमोइथेन. CH2 plus Br2 CCl4 gives us CH2 Br. 1,2-dibromoethane. 1,2-dibromoethane plus 2KOH alcoholic KOH plus gives us at 150 temperature gives us CH triple bond CH plus 2KBr plus H2O. Ethene to ethine. Br2 plus in the presence of CCl4 gives us 1,2-dibromoethane plus 2KOH gives us alcoholic KOH gives us CH triple bond CH 2KBr plus 2H2O. K के साथ Br और एक और K के साथ Br, H2O और एक और H2O, एक H और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज H2O, फिर एक OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज, तो बचा CH और CH. बाकी वैलेंसीज के साथ उन्होंने ट्रिपल बॉन्ड बना लिया. Starting from ethene, outline the reaction for the preparation of following compounds: ethane and ethylene glycol.
Starting from ethene, outline the reactions for the preparation of following compounds: ethane and ethylene glycol. ethene to ethane बनाने का तरीका है हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, कैटलिस्ट और हीट करें तो इथेन बन जाएगा. एथीन टू इथाइलिन ग्लाइकोल. तो एथीन, 2 molecules of ethene plus 2 KMnO4 plus 2H2O. 2 ethene plus 2 KMnO4 plus 2H2O हमें देगा 3 ग्लाइकोल इथाइलिन ग्लाइकोल plus 2 MnO2 plus 2 KOH. 2 CH2 double bond CH2 plus 2 KMnO4 plus water cold and heated 3 CH2OH CH2OH plus 2 MnO2 plus 2 KOH plus 2 MnO2 plus 2 KOH plus 2 KOH. K इधर से, H इधर से, OH इधर से, जो 2 KOH हैं, KOH. MnO4 नहीं, MnO2 2 दफ़ा लिख दिया. बाकी O2 4 O बच गए. तो 1 O 2 O 3 4 5 6 O. Ethene to ethylene glycol. 2 CH2 double bond CH2 plus 2 KMnO4 plus water gives us 3 CH2 OH ethylene glycol. 2 MnO2 plus 2 KOH. 2 MnO2 plus 2 KOH. Ethene to ethane, CH2 H2 plus nickel in the presence of nickel, catalyst, heated, CH3. Ethene to ethylene glycol plus 2 KMnO4 plus 2 water plus 2 molecules of water gives us CH2OH and OH again. 2 MnO2 plus KOH. 2 MnO2 plus 2 KOH. 2 MnO2 plus 2 KOH. तो यहाँ पे लिखें एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस 2 KMnO4 प्लस 2 KMnO4 प्लस वाटर में देगा MnO2 प्लस वाटर प्लस ये है यहाँ पे COH H2 तीन मॉलिक्यूल्स इसके, दो इसके भी दो और इसके भी दो, सबके दो मॉलिक्यूल्स. एथीन से इथाइलिन ग्लाइकोल. तो KMnO4 प्लस वाटर की एडिशन कराई, कोल्ड और हीट किया, CH2 OH MnO2 और KOH बना. Write down the structural formula for products that are formed when 1-butene will react with the following reagents. 1-butene. Write down the structural formulas for the products that are formed when 1-butene will react with the following reagents. 1-butene with H2, तो ये ब्यूटेन बन जाएगा और प्लेटिन ब्यूटेन बन जाएगा. जब ब्यूटीन 1-butene will react with bromine in CCl4, तो ये बन जाएगा 1,2-dibromobutane. 1,2-dibromobutane. ये इसको बॉन्ड को तोड़ने में मदद देगा. Br इस तरफ और Br एक इस तरफ. 1,2-dibromobutane. तो जब ये कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 बेसिक मीडियम में रिएक्ट करेगा, कोल्ड डाइल्यूटेड KMnO4 बेसिक मीडियम में रिएक्ट करेगा 1-butene, तो KMnO4 प्लस 4H2O कोल्ड OH, तो ये बनेगा 1,2-butanediol. 1,2-butanediol. 4 ब्यूटेन डाई पे ओल, 2 ओल है. अल्कोहलिक ग्रुप 1,2-butanediol, तो ये है 1,2-ethanol. 1,2
एथेन डाइओल, 1,2 एथेन डाइओल, एथेन डाइओल ये है 1,2 ब्यूटेनोल, ब्यूटेन डाइओल, 1,2 ब्यूटेन डाइओल प्लस 2 MnO2 प्लस 2 KOH। यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स इसके लिए, 2 इसके, 4 इसके, तो ये बैलेंस कर दिया, 3 2 4, 3 मॉलिक्यूल हम 1 ब्यूटीन के, 2 KMnO4 और 4 वाटर, 4 लिए वाटर के, 2 KMnO4 प्लस 4 H2O कोल्ड OH नेगेटिव। बेसिक मीडियम में रखा तो 3 मॉलिक्यूल्स हमें मिले 1,2 ब्यूटेन डाइओल के, 1,2 ब्यूटेन डाइओल के, बाकी 2 MnO4 MnO2 के और बाकी 2 KOH के, 2 KOH के। ये गलत था, यहाँ पे है 2 KOH, KOH। बाकी जब HBr के साथ रिएक्ट करे तो एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा इस तरफ और एक Br ऐड हो जाएगा, या फिर Br इधर आ जाए और H इधर आ जाए, तो ये बन जाएगा 2 ब्रोमोब्यूटेन। पहले तो ये टूट जाएगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, CH2 के पास H आ जाएगा और Br इसके पास चला जाएगा, तो 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन। Question number 26. Write down structural formulas for the products that are formed when 1-butene will react with the following reagents. Write down the structural formulas for the products that are formed. Structural formulas for the products that are formed when 1-butene will react with the following reagents. O2 in the presence of Ag2O and HOCl and dilute H2SO4. तो CH2 CH2 CH double bond CH2 plus O2 in the presence of Ag2O यानी 300 डिग्रीज पर, 300 डिग्री सेल्सियस पर जब करें तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे लिख दिया जाएगा 1,2 ब्यूटेन ऑक्साइड, CH2 CH3 CH2 CH एंड CH2, बाकी O के साथ 2 वैलेंसीज जुड़ के, डबल बॉन्ड ख़त्म, डबल बॉन्ड ख़त्म, इसका डबल बॉन्ड ख़त्म तो वैलेंसी खाली होगी, इधर से O आ गया इधर, एक इसके साथ वैलेंसी जोड़ी, एक इसके साथ वैलेंसी जोड़ी, ठीक है। 1,2 ब्यूटेन, 1,2 ब्यूटेन ऑक्साइड, एक ऑक्साइड लगा, 1,2 ब्यूटेन ऑक्साइड, 1,2 ब्यूटेन ऑक्साइड जब O2 इन द प्रेजेंस ऑफ Ag2O के साथ रिएक्ट करे तो 1,2 ब्यूटेन ऑक्साइड, और जब HOCl के साथ 1 ब्यूटेन रिएक्ट करता है तो फिर यहाँ पे आता है एक क्लोरीन ऐड हो जाता है इस तरफ और एक हाइड्रोजन हो जाता है दूसरी, और एक हो जाता है OH ऐड हो जाता है, OH वो हो जाता है इस तरफ, CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2 के दरमियान है, तो यहाँ पे जुड़ गया क्लोरीन CH2 के साथ, क्लोरीन और CH के साथ OH, 1 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, 1 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। तीसरे नंबर पे डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करें तो फिर हमारे पास बनता है HOSO3H, HOSO3H, SO3H और HO, तो ब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट यानी CH3 CH2 CH2 और CH2OSO3H, H एक इस तरफ गया, CH2 बन गया, और कहाँ गया SO3H, बस एक H के इधर, और ये OSO3 इसके साथ आगे जुड़ जाएगा। दोबारा से राइट डाउन स्ट्रक्चरल फार्मूलाज फॉर द प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन 1-butene विल रिएक्ट विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स। O2 इन द प्रेजेंस ऑफ Ag2O, तो Ag2O की प्रेजेंस में तो ये बन जाएगा ब्यूटेन ऑक्साइड, ब्यूटेन ऑक्साइड 1,2 पे ब्यूटेन ऑक्साइड, और जब HOCl के साथ रिएक्ट करेगा तो Cl इसके टर्मिनल कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और OH चला जाएगा इधर CH के साथ, तो ये बन जाएगा 1 क्लोरो और फिर 2 3 1 1 2 हाँ 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन,
1 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर H इसके साथ आके जो बॉन्ड बना लेगा, सॉरी H इधर आके बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, OSO3H इसके साथ आके बॉन्ड बना लेगा, तो ये बन जाएगा ब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट। और ये हो जाएगा फर्स्ट 1,2 ब्यूटेन ऑक्साइड, दूसरे में HOCl के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा 1 क्लोरो और फिर 1 पे क्लोरो 2 पे हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, 1 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। यहाँ से H चला गया इस तरफ को, CH3 CH2 CH, और ये बन जाएगा ब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, ब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, HSO4, ब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट। सो O2 इन द प्रेजेंस ऑफ Ag2 के ऊपर बनेगा कैसे, 1,2 ब्यूटेन ऑक्साइड, 1,2 ब्यूटेन ऑक्साइड, और सेकेंड वाले में HOCl के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा 1 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, और ये बनेगा ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा ब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फाइड, ब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट, 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 ब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा ब्यूटाइल हाइड्रोजन sulfate. After an ozonolysis experiment, the only product obtained was acetaldehyde CH3CHO. Can you guess the structural formula of the compound? After ozonolysis experiment, the only product obtained was acetaldehyde. Can you guess the structural formula of the compound? After an ozonolysis experiment, the only product obtained was acetaldehyde. Can you guess the structural formula of this compound? Only one product is obtained by ozonolysis of experiment of symmetrical molecule. In case of acetaldehyde, a product. In case of acetaldehyde, a product. Parent symmetrical molecule is 2-butene. 2-butene on ozonolysis will undergo cleavage between carbon 2 and 3. As a result, 2 acetaldehyde molecules will be formed by ozonolysis of 2-butene. CH3CH. ये है 2-butene plus O3 ओजोनाइड, then zinc की presence में it will form 2CH3CHO plus zinc oxide. Only one product is obtained by ozonolysis of symmetrical molecule. In case of acetaldehyde, a product parent symmetrical molecule is 2-butene. 2-butene and ozonolysis will undergo 2-butene. On ozonolysis will undergo a cleavage between carbon 2 and 3. As a result, 2 acetaldehyde molecules will be formed by the ozonolysis of 2-butene. Ozonide and then CHO2 बनेंगे. CH2 plus O3 हमें मिलता है ओजोनाइड. देन ओजोनाइड के अंदर वाटर, ओजोनाइड में वाटर ऐड करेंगे तो बनेगा फॉर्मल्डिहाइड. यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है, वहाँ पे ब्यूटीन था, यहाँ पे एथीन है. ओजोन इज़ अ हाईली रिएक्टिव एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन. It reacts vigorously with alkenes to form unstable monozonide. It rearranges spontaneously to form an ozonide. Monozonide unstable, फिर बन जाता है रीअरेंजमेंट के बाद ओजोनाइड में कन्वर्ट हो जाता है. CH2 plus O3 हमें मिलता है C, डबल बॉन्ड तो ख़त्म हो जाएगा,
एच सी के साथ और सी के साथ यहाँ पे ओ ओ ओ, 3 ओ एक लाइन में जुड़ जाते हैं, इसको कहते हैं मोलोजोनाइड। मोलोजोनाइड अनस्टेबल प्रोड्यूस होता है, रीअरेंजमेंट होकर एक ऑक्सीजन अपवर्ड चला जाता है और ये बन जाता है एक राइबोज शुगर की तरह का। ओजोनाइड्स आर अनस्टेबल कंपाउंड्स, ओजोनाइड्स आर unstable compounds and are produced directly by treatment with zinc and H2O. The reduction produces carbonyl compounds, aldehydes और ketones. इनके रिडक्शन से aldehydes मिलते हैं या ketones मिलते हैं। हम क्या करते हैं, ओजोनाइड्स आर अनस्टेबल कंपाउंड्स, ये अनस्टेबल होते हैं कंपाउंड्स, एंड आर रिड्यूस्ड डायरेक्टली बाय ट्रीटमेंट विद जिंक एंड H2O, और इनको रिड्यूस कर दिया जाता है बाय ट्रीटमेंट ऑफ जिंक एंड H2O. द रिडक्शन प्रोड्यूसेस कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। द रिडक्शन प्रोड्यूसेस एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, H2O2 प्लस जिंक, ये हो गया, पानी इसमें ऐड किया तो ये बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड CH2O एंड CH3OH, CH2O, CH2O फिर CH2O और ये O क्या इसके साथ तो मिल गया H2O2, H2O2, H2O2 प्लस जिंक किया तो जिंक ऑक्साइड बाहर और वाटर बाहर। ओजोनोलाइसिस इज यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन एल्कीन। ओजोनोलाइसिस इज यूज्ड टू लोकेट द डबल बॉन्ड इन प्रोटीन। तो ओजोनोलाइसिस से बनता है मोलोजोनाइड अनस्टेबल, फिर रीअरेंजमेंट होकर बन जाता है ओजोनाइड। ओजोनाइड के अंदर हम ऐड करते हैं वाटर। वाटर ऐड करने से होता ये है कि ओजोनाइड्स आर अनस्टेबल कंपाउंड्स एंड आर रिड्यूस्ड डायरेक्टली बाय ट्रीटमेंट विद जिंक and are reduced directly with zinc. The reduction produces carbonyl compounds. इसका रिडक्शन करा देते हैं, यानी हाइड्रोजन एडिशन करा देते हैं और एक ऑक्सीजन रिमूव करा देते हैं। यहाँ से CH2O डबल बॉन्ड के साथ एक फॉर्मेल्डिहाइड, फिर CH2O एक ये बाहर फॉर्मेल्डिहाइड, 2 फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स के, और ये H2 और ये वाटर O बाहर की तरफ। जिंक के साथ रिएक्ट कराया तो जिंक ऑक्साइड और वाटर बाहर। ओजोनोलाइसिस इज यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन एल्कीन। मोलोजोनाइड अनस्टेबल, फिर ओजोनाइड, मोलोजोनाइड अनस्टेबल, फिर ओजोनाइड। तो यहाँ पे लिखे आफ्टर एन ओजोनोलाइसिस एक्सपेरिमेंट द ओनली प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड वाज एसिटाल्डिहाइड। कैन यू गेस द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड? अच्छा, structural formula of this compound would be butene. Only one product is obtained by the ozonolysis of symmetrical molecule. In case of acetaldehyde, a product parent symmetrical molecule is 2-butene. Only after an ozonolysis experiment, the only product obtained was acetaldehyde. Can you guess the structural formula of this compound? Only one product is obtained by the ozonolysis of symmetrical molecule. In case of acetaldehyde, a product parent symmetrical molecule is 2-butene. Parent symmetrical molecule is 2-butene. 2-butene on ozonolysis will undergo cleavage between carbon 2 and 3. As a result, 2 acetaldehyde molecules will be formed by an ozonolysis of 2-butene. By an ozonolysis of 2-butene. By an ozonolysis of 2-butene. CH3 CH double bond CH, then CH3 plus O3 ओजोनाइड बनेगा। ओजोनाइड से बनेगा 2CH3 CHO, फिर जिंक ऑक्साइड। जी हाँ, जिंक ऑक्साइड बनेगा। अगला सवाल, द एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू एन एल्कीन obeys Markovnikov's rule. Predict the structures of the alcohols obtained by the addition of acid to propene. एसिड का एडिशन किया प्रोपीन के अंदर, तो वो क्या पूछ रहा है, द एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू एन एल्कीन obeys Markovnikov's rule. Predict the structures of the alcohols obtained by the addition of the acid to propene. The addition of sulfuric acid, एडिशन की है सल्फ्यूरिक एसिड की टू एन एल्कीन, एक अल्कीन में जो ओबे करता है Markovnikov's rule. Predict the structures of the alcohols. अल्कोहल्स का स्ट्रक्चर बताइए क्या है, obtained by the addition of the acid, जो एसिड के एडिशन होने के बाद वजूद में आया है, टू प्रोपीन, प्रोपीन में जो एसिड एडिशन ऐड किया है उसके बाद जो स्ट्रक्चर आया उसका स्ट्रक्चर बताइए, प्रिडिक्ट कीजिए। तो प्रोपीन जब रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ तो हमें क्या मिलता है, एक हाइड्रोजन इस तरफ गया, नहीं Markovnikov's रूल है, तो एक हाइड्रोजन इस तरफ,
फिर एक पूरा उस तरफ चला गया OSO3H, और फिर CH3OSO3H प्लस वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस ऐड करें तो यहाँ पे H2SO4 और OH इस तरफ OSO4 H2SO4 एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो 2 प्रोपेनॉल बनता है. The addition of sulfuric acid to an alkene obeys Markovnikov's rule. Predict the structures of the alcohols obtained by addition of the acid to propene. Markovnikov's rule. ये क्या है Markovnikov's rule? Markovnikov's rule. Addition of sulfuric acid. When alkenes are treated with cold concentrated sulfuric acid, they are dissolved because they react with addition to form an alkyl halogen hydrogen sulfate, for example. ये बना देते हैं. These alkyl hydrogen sulfates on boiling with water decompose to give corresponding alcohols. The overall reaction involves the addition of water to an alkene, and it is therefore called hydration reaction. CH3CH2OSO3H H2 plus into 100 degrees Celsius CH3CH2OH और H2SO4 हमें मिलता है. Markovnikov's rule ये है. The rule states that in addition of an unsymmetrical reagent to an unsymmetrical alkene, the negative part of that adding reagent goes to that carbon constituting the double bond, which has least number of hydrogen atoms. Markovnikov rules. Markovnikov's rule. The rule states that in the addition of an unsymmetrical reagent, unsymmetrical reagent ऐड होने जा रहा है of an unsymmetrical reagent to an unsymmetrical alkene. एक unsymmetrical alkene में जब unsymmetrical addition होने जा रहा है एक reagent का, the negative part of the adding reagent, जो negative part होगा adding reagent का, goes to that carbon, उस carbon के पास जाएगा constituting the double bond, जिसके पास double bond होगा, constituting the double bond. नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास डबल बॉन्ड होगा, विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, उस वाले के पास जिसके पास सबसे कम, जिसके पास डबल बॉन्ड भी है और सबसे कम हाइड्रोजन भी है, विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. तो ये भी हो सकता है 1 ब्रोमोप्रोपेन जो नहीं बना मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक, ये Br नहीं बनेगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन नहीं बनेगा मार्कोनिकोव रूल के बारे में. जब कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड होने जा रहा हो तो नेगेटिव पार्ट जो उसका रिएजेंट का वो जाएगा उसके पास जिसके पास डबल बॉन्ड होगा और जिसके पास डबल बॉन्ड होगा और सबसे कम हाइड्रोजन होंगे, लीस्ट हाइड्रोजन एटम्स होंगे जिसके पास. तो 2 ब्रोमोप्रोपेन एक्चुअल प्रोडक्ट होगा. इसी तरह 1 2 3 4, तो इसके अंदर 2 मिथाइल प्रोपीन है, 2 मिथाइल प्रोपीन है, इसके अंदर HBr ऐड होगा तो Br जाएगा जहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे. तो यहाँ पे ये चीज़ लगता था कि बनेगी 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 1 पे ब्रोमो 2 पे मिथाइल और प्रोपेन, कैसे 1 2 3 ये 3 है. तो यहाँ पे आके CH3 है, CH3 CH इधर आके जुड़ गया और CH2 की जगह पे साथ Br आ गया, लेकिन Br जाएगा इस तरफ, Br जाएगा C के पास और CH3 इसके पास ही रहेगा और CH3 बन जाएगा CH2. तो ये है मार्कोनिकोव्स रूल. अब ये क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं द एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू एन एल्कीन ओबेज मार्कोनिकोव्स रूल. प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द अल्कोहल्स ऑब्टेन्ड बाय द एडिशन ऑफ एसिड टू प्रोपीन. अब प्रोपीन है, अब इसके अंदर हमने ऐड करना है सल्फ्यूरिक एसिड. अब हाइड्रोजन नहीं, नेगेटिव पार्ट जो होगा ना इसका वो जाएगा इसके पास, चला गया इसके पास, और हाइड्रोजन जाएगा इसके पास. तो ये हो गया. अब इसको हम हाइड्रेशन रिएक्शन जो लिखा है यहाँ पे
क्या लिखा हुआ है, द ओवरऑल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ वाटर टू एन एल्कीन एंड इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड हाइड्रेशन रिएक्शन। यानी इसको हम पानी में से पानी में डालते हैं इसको, ये है इसका नाम है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट 1 2 इथाइल, और ये हाइड्रोजन और ये SO4 सल्फेट इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को हमने वाटर में ऐड किया एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये बन जाएगा 2 प्रोपेनॉल, यानी ये यहाँ पे OH रह जाएगा, SO3 वापस ऊपर, ओ बाहर, ये बन जाएगा CHOH CHOH, ये CH3 ऐसे ही, यहाँ पे आ जाएगा H2SO4 यहाँ पे SO3 था, SO3 बाहर की तरफ आया और इसके साथ जाके मिल गया वाटर के साथ, तो बन जाएगा H2SO4। ठीक है। The addition of sulfuric acid to an alkene obeys Markovnikov's rule. The addition of sulfuric acid to an alkene obeys Markovnikov's rule. Predict the structures of the alcohols obtained by the addition of the acid to 1-butene. अब 1-butene के बारे में कह रहा है, क्या बताएं, पहले उसने कहा प्रोपीन के बारे में बताएं, 1-प्रोपीन के बारे में, अब वो कह रहा है 1-ब्यूटीन के बारे में बताएं। तो 1-ब्यूटीन के अंदर जब हम ऐड करेंगे H2SO4, तो मार्कोनिकॉव्स रूल के मुताबिक जो हाइड्रोजन है वो इस तरफ आएगा, यानी CH3 बनेगा, और इस SO4 HSO4 जो सा वो इसके साथ आके कनेक्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यहाँ पे गलत लगा रखा है, इसके साथ आगे इस CH के साथ आगे जुड़ गया। अब क्या होगा, CH3 हो गया। अब इसको वाटर में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, SO3 यहाँ से इसके पास आ जाएगा, SO4 बन जाएगा, और ये H2SO4 निकल जाएगा, तो ये बनेगा 1 2 3 4, तो ब्यूटेन और ओल हो जाएगा 2 पे 2 ब्यूटेनॉल, ओल लग गया, ठीक हो गया। मार्कोनिकॉव्स रूल यही है कि आपका जो नेगेटिव अनसाइमेट्रिकल अल्कीन में अगर आप अनसाइमेट्रिकल रिएजेंट को ऐड करने लगे हैं, तो अगर जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है वो उस तरफ जाएगा जहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे और उसके पास डबल बॉन्ड भी होना चाहिए, और बाकी हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के पास या दूसरे कार्बन के पास चला जाएगा, अटैच हो जाएगा वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन हो। In addition of an unsymmetrical reagent to an unsymmetrical alkene, the negative part of the adding reagent goes to that carbon constituting the double bond which has least number of hydrogen atoms. ठीक है, तो यहाँ पे 2 ब्यूटेनॉल बन रहा है, यहाँ पे 2 प्रोपेनॉल बन रहा है। H2SO4 को ऐड किया एल्कीन के अंदर, प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोपीन के स्ट्रक्चर, A से 2 प्रोपीन करना, यहाँ पे एसिड करना 1 ब्यूटीन के लिए। अगला सवाल, तो ये सवाल है, द एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू एन एल्कीन, द एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू एन एल्कीन ओबेज मार्कोनिकॉव्स रूल, प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द अल्कोहल्स ऑब्टेन्ड बाय द एडिशन ऑफ द एसिड टू 2 ब्यूटीन। अब 2 ब्यूटीन में ऐड करना है तो सिंपल H जाएगा कहाँ पर, और SO4 कहाँ पे जाए, HSO3 OSO3H जाएगा कहाँ पर, नेगेटिव पार्ट जाएगा इस तरफ जहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, तो लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों तरफ ही लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे लगा दिया और इधर लगा दिया H। इसकी को हमने वाटर में ऐड किया और 100 डिग्रीज़ के ऊपर से हीट किया, तो ये हमें मिला ये SO3 यहाँ से इधर गया तो SO4 बन गया, H2SO4 बन गया, और ये 2 ब्यूटेनॉल। प्रिडिक्ट द मोस्ट लाइकली प्रोडक्ट ऑफ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड 2, प्रिडिक्ट द मोस्ट लाइकली प्रोडक्ट ऑफ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, HCl को ऐड किया है हमने 2-मिथाइल 2 ब्यूटीन में, तो क्या बनेगा, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। अब ये बना कैसे, इसका फॉर्मेशन भी बताइए कैसे बना। तो पहले तो ये पता होना चाहिए 2-मिथाइल 2 ब्यूटीन क्या होता है, एक ब्यूटीन है, 4 कार्बन है, 2 के ऊपर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, 2 पे मिथाइल भी लगा हुआ है, तो ये बना है 2-मिथाइल 2 ब्यूटीन। इसके अंदर HCl ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे Cl और H, Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव कहीं पे इधर आके जुड़ेंगे, डबल बॉन्ड तो ख़त्म होगा, और यहाँ पे जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन है
उस हाइड्रोजन है उसके पास जाएगा नेगेटिव पार्ट, तो Cl इस तरफ और हाइड्रोजन इस तरफ यानी CH2, तो ये बनेगा 2 क्लोरो, 2 पे क्लोरो है, 2 पे ही मिथाइल है और फिर ये बाकी बचा ब्यूटीन. Mention this reaction is according to Markovnikov's rule. Explain the formation of this product. ये बता दिया हमने. Predict the most likely product of the addition of hydrogen chloride. अब आगे अगला सवाल. Mention some important uses of ethene. ethene की important uses क्या हैं? For the manufacture of polythene, a plastic material used for making toys, cables, bags, boxes, etc. polythene बनाने में यूज़ होता है. For artificial ripening of fruits, artificially फ्रूट्स को राइपन करने में यूज़ होता है. फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. एज अ जनरल एनेस्थेटिक फॉर प्रिपेयरिंग मस्टर्ड गैस, अ केमिकल यूज्ड इन वर्ल्ड वॉर. इट इज़ अ पावरफुल वेजिकेंट कॉजेज ब्लिस्टर्स. फॉर प्रिपेयरिंग मस्टर्ड गैस, अ केमिकल यूज्ड इन वर्ल्ड वॉर. इट इज़ अ पावरफुल वेजिकेंट that is causes blisters. As starting material for a large number of chemicals of industrial use such as glycols, antifreeze, ethyl halide, ethyl alcohol, etc.